Let's solve this kind of problem in quadratic equations. So we have to solve root of 6 plus again root of 6 plus root of 6 and so on infinitely. So if you see carefully, just see this part. Now this part is exactly same as x if I let whole of this as x. तो पूरे को हम x मान लेते हैं, माना हुआ है हमने. तो ये वाला पार्ट जो है, it is again same as x, root of 6 plus root of 6 and so on. So may I write this as x is equal to root of 6 plus. Now this whole can be replaced by x. So I can write this as x is equal to root of 6 plus x. Now if I square both sides, I square on both sides, squaring both sides, I get x square is equal to 6 plus x, that is root of 6 plus x. So x square minus x minus 6 is equal to 0. I get a quadratic equation, and now it should be easy for you. It's simply splitting the middle term you have to perform. So factors will be minus 3x and plus 2x, minus 6 is equal to 0. ये स्प्लिटिंग बहुत आसान होनी चाहिए आपके लिए. इसका मैंने शॉर्टकट में एक शॉर्ट्स में वीडियो भी अपलोड कर रखा है, जिसमें आप डायरेक्ट ये फैक्टर्स तक पहुंच सकते हो. x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एंड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन either x minus 3 is equal to 0, which gives me x is equal to 3, or x plus 2 is equal to 0, which gives me x is equal to minus 2. Alright? Now, but we have to reject this minus value. Why? Because this is the square root of a number, और real number system में square root of negative number जो है वो square root की value कभी negative नहीं आती है, right? In real number system. ठीक है, तो 3 is the answer to this. So now let's get to a shortcut trick. इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं. अगर 6 के ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं which are consecutive, and in such questions you will get this usually. So if these are consecutive factors, then the bigger factor is the answer. You can apply it on some more questions if you have somewhere in a book. So 6 is equal to 2 times 3. So 3 is going to be the answer, right? Let's get to the logic behind it. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है हमारे पास कि 3 आंसर क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, जब हम इसे स्क्वायर करेंगे, आई एम गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इस नंबर के ऐसे फैक्टर्स बनेंगे सो दैट वी आर गोइंग टू गेट 1 ओवर हियर, बिकॉज वी आर ऑलवेज रिप्लेसिंग इट बाय एक्स. तो यहां तो हमें 1 ही मिलने वाला है और कुछ मिलने वाला नहीं है. तो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव फैक्टर्स. और दूसरी बात ये कि उनमें से जो बड़ा फैक्टर है उसके साथ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, यहां से 3 पॉजिटिव आ जाएगा और 2 नेगेटिव आ जाएगा. तो अगर यहां बीच में प्लस का साइन है, तो बिगर फैक्टर इज गोइंग टू बी योर आंसर. दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक फॉर MCQ. So I hope you like the video. Please do not forget to like and subscribe. Happy practicing. Thank you.